जीनियाज यूरोप ट्रैवलॉग में अब तक आपने देखा। अभी हम रखेंगे, फिर हमको डिनर करना है, फिर मुझे स्टोरीज वगैरह डालनी है, तो आई विल सी यू वेरी सून विद द डिटेल्ड रूम टूर। बाय। जीनिया, जीनिया, जीनिया उठना। क्या है? अरे आज थर्सडे है यार डूड, नया वीडियो किधर है? हाँ? आज थर्सडे है। क्या आज थर्सडे है? और नहीं तो क्या। अरे बाप रे, इतनी जल्दी वीडियोस डालने की आदत नहीं है ना, इसलिए थोड़ा Okay then, welcome back to the channel. I am Jiniya and this is episode 2 of Jiniya's Europe Travelogues, or JET as I like to call it. Thank you so much for all the love you guys have showered on episode 1. आप सबने देखा, पसंद किया, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है जानकर that you all enjoyed the first episode. And this is episode 2 जिसमें आप देखने वाले हैं हमारे ट्रिप के डे 2 का फर्स्ट हाफ. Now why first half? Let me tell you about that. तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारी जो पहली डेस्टिनेशन रही वो थी पेरिस. एंड पेरिस में लैंड होने के बाद आफ्टर वी चेक इन टू द होटल, हमने डिनर खाया, फिर हम सो गए. देन डे 2 बिगैन विद फ्रेश एनर्जी, फ्रेश विगर फॉर द ट्रिप. एंड डे 2 वॉज एक्चुअली अ वेरी इवेंटफुल डे. बहुत सारी मजेदार चीजें हुई, तो वो सारा कुछ एक ही व्लॉग में डाल देती तो वो ज्यादा ही लंबा हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो फर्स्ट पार्ट जो कि आज आप देखने वाले हैं इज गोइंग टू बी द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, जहां पे आप देखेंगे कि हम सबसे पहले गए थे आईफिल टावर, विच इज अ सुपर ग्रैंड थिंग इन इट सेल्फ. की ट्रिप की शुरुआत ही आईफिल टावर से होती है, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम यू विजिट द आईफिल टावर यू आर गोइंग टू हैव द सेम फीलिंग. एंड हाउ डू आई नो दैट? क्योंकि मैं पहले भी जा चुकी हूँ आईफिल टावर, एंड पहली बार जाके जो फीलिंग हुई, द फीलिंग ऑफ ग्रैंड्योर, द फीलिंग ऑफ ऑ, द फीलिंग ऑफ अस्टॉनिशमेंट, हैप्पीनेस, यू नो, इन सब चीजों का एक मिक्सचर होता है. And it's just such a beautiful feeling to be standing there in front of that magnanimous, magnificent structure. And इस बार मैं गई, it was super cold, the weather was nothing like what it was the first time, लेकिन जो feeling थी it was exactly the same. And पहली बार जब मैं गई थी, it was in the summer months of course, तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी. We had to wait in the queue for a really long time. This time the queue was surprisingly the queue proceeded surprisingly much quicker, even though tourists तो obviously रहेंगे ही, चाहे कोई भी महीना हो. पेरिस है, आईफिल टावर है, तो टूरिस्ट तो रहेंगे ही, बट कंपैरेटिवली बहुत ही जल्दी हम पहुंच गए सेकंड लेवल तक. एंड वहां से जो है सारे मस्त मस्त से नज़ारे आप अभी देखने ही वाले हैं. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रिप वॉज सिटी टूर ऑफ पेरिस, जो कि कोच में बैठ के ही हमने पूरा शहर घूमा. एंड हमारी जो टूर गाइड थी कैथरीन, उन्होंने हमें सिटी के पूरे हिस्ट्री के बारे में बताया. सो इट वाज अ लॉट ऑफ फ्रेंच हिस्ट्री दैट वी गॉट टू नो अबाउट. एंड जो भी प्लेसेस में मैं गई थी वहाँ से मैंने आर्क दे ट्रायम्फ और शॉन्स-एलिजे फर्स्ट टाइम भी देखा था, बट देयर वर सम न्यू प्लेसेस. एंड लूव्र ऑफ कोर्स मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, बट देयर वर सम प्लेसेस जो हम पहली बार नहीं जा पाए थे, वो भी हमने कवर की. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द व्लॉग एंड आई एम गोइंग टू कैच यू राइट एट द एंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो, गुड मॉर्निंग, बोंजूर फ्रॉम पेरिस. कल रात हम होटल में आए और फिर रूम टूर वीडियो आपने देखा, उसके बाद हम डिनर खा के सो गए थे. एंड उसका डिटेल्स भी मैं आपको बाद में दूंगी. अभी फ़िलहाल तो हम रेडी हो रहे हैं, तो उसका एक नज़ारा आपको दिखाती हूँ. ये हैं हमारे कपड़े, हमारे नए पसारे यहाँ पर, और ये मम्मी जो कि बहुत एक्साइटेड हो रही हैं आज के हमारे ट्रिप के लिए. और मैंने मेन रीज़न ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे दिखाना है पेरिस का व्यू फ्रॉम आवर विंडो. सो ब्यूटीफुल. अभी सुबह के 7:45 बज रहे हैं, बट बिकॉज इट्स विंटर, इट्स एकदम डार्क आउटसाइड, ऐसा लग रहा है अर्ली मॉर्निंग नाइट का टाइम है. एंड एकदम गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं फ्रॉम देयर, एज यू कैन सी. इट्स वेरी नाइस एंड पीसफुल एंड मस्त. तो हाँ, अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ. है नहीं रखो बैग. मैं रेडी होने जा रही हूँ. उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे फॉर इंग्लिश स्टाइल ब्रेकफास्ट. एंड फिर हम निकलेंगे. सबसे पहले जा रहे हैं आईफिल टावर, तो वहाँ पे आएंगे मज़े. उसके बाद हम जाएंगे, वहाँ पे आएंगे और भी बहुत मज़े. तो हाँ, आज काम है, मुझे सिम कार्ड डालना है, मुझे अपने पैसों का बंदोबस्त करना है. सो आई हैव टू डू ऑल ऑफ दैट. आई एम गोइंग टू गेट रेडी नाउ. आई विल सी यू लेटर. बाय. Of visiting on the second level, still standing strong
since the year it was made in 1889. So we'll be visiting that, and that after that we'll be having a guided city tour where the guide would be meeting us at the Arc de Triomphe, the triumphal arch that was commissioned by Napoleon Bonaparte. So that's where we will be meeting our guide. There's also the place where we'll be having a guided tour, passing two palaces, Grand Palace, Petit Palace. Grand Palace is a bigger palace and Petit is a small. That would be on the right hand side. On the left hand side will be that's where the President Emmanuel Macron, yes, he stays over there. And then making our way towards the Concord Square, that's where the Guillotine, 1100 Guillotine had taken place during the French Revolution. So probably if we get a parking over there, so that would be the second stop. Then Hotel Crillon, and then also a Navy base over the headquarters. And then making our way towards the Opera House, passing by Opera House, and then ahead we'll be seeing the Louvre Museum. Then crossing on the other side of the bank, that's how the city is divided. The river Seine divides the city, the left bank and the right bank. So once we're there on the other side of the bank, then the Orsay Museum. Again, that's one of the museum prior to that, which was the train station, where all the trains coming from London or any other countries, they used to halt over here. And then passing by the Parliament building, then the Alexander Bridge, that's where the most of the shooting that takes place for the magazines. And opposite to that will be the Invalids. So that was basically a hospital that used to take care of the soldiers. Hello, so we are in the bus right now and breakfast वगैरह सब हो गया है. We are heading towards Eiffel Tower and आज का weather is काफ़ी gloomy, not at all complimenting the chipper mood that I am in. But let me show you the outside का नज़ारा and our bus का नज़ारा also. The streets of Paris, and this is our bus. And this is Mom. Hello. How are you feeling? Yeah, I'm enjoying very much. And it's very, very cold. I feel like my insides have also gotten frostbite. The last time I felt so cold was when I had gone to Boston. जब इतनी ठंड पड़ी थी, photos निकालने के लिए we had to, I had to remove my hands from the gloves and then click photos. And my God, it felt like needles were piercing each and every cell of my body. That's literally what it feels like right now. But ठीक है, चलो कर लेंगे एक हफ्ते की बाद. So yeah, that's what it is. And बहुत ही exciting itinerary है हमारी. अभी जो हमारे group leader है एल्ड्रिन सर, उन्होंने अभी explain किया. So I will reveal everything one at a time. अभी तो सब नहीं बताऊँगी. But next video coming up in Eiffel Tower, and God, 4.5 years के बाद I am going. So it's very exciting. I frankly don't remember anything about the streets of Paris. मुझे जगह I remember the Louvre, I remember the Eiffel Tower and everything, but रास्ते वगैरह के बारे में मुझे कुछ याद नहीं है for some reason. I think because the weather was different, कि हम दूसरी जगह पे रह रहे थे, पता नहीं क्या है. But it's become very quaint. I think I feel a lot has changed after COVID. I'm not sure what the reason is, but that's what it is. And there is काफ़ी interesting graffiti in different places, as you can see. अभी हम signal पे रुक गए हैं. तो yeah, I will see you at the Eiffel Tower. Bye. The feeling of seeing the Eiffel Tower is exactly like it was during the first time I did. Magnificent, beautiful. So while we'll be passing by the Eiffel Tower on the left hand side, so the second level that you see, so that's where we would be going to. Yes. So that's simple. The 24 meters is for the telecommunication. Yay! Oh my God! The total weight is You see 10,100 it? tons. You surely do. हेलो, हम खड़े हैं आईफिल टावर के जस्ट नीचे एंड यहाँ पे आपको कंपाउंड दिख रहा है पूरा. वहाँ पे सब लोग फोटोज़ खींच रहे हैं. अलग अलग रंग बिरंगे पेड़ आपको दिख रहे हैं.
और ये हम हैं। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पर एंड हम अंदर जा रहे हैं। किला डेजा वू वाली फीलिंग आ रही है, कान में बहुत ठंड भी जा रही है। ओह, वी आर गोइंग टू गो टू द सेकंड level of the Eiffel Tower now. I need to wear my beanie because it's extremely cold here. Okay, there is some fishing activity going on here and we are heading upwards. Half our group members have gone and I don't even know where. And oh my god, it felt so good the last time I was standing at the bottom of the Eiffel Tower. It still feels the same except that it just feels cold also. Okay, I think there are people should be somewhere there. I have no idea where these guys are. The Eiffel Tower. I'm going to record more videos when I reach the top. I'll see you later, bye. And we are now going to go inside. Lift से हम जाएंगे Eiffel Tower के second level तक. And this is what Paris Fashion Week Day 2 is looking like because it's super cold and as you can see there is all thund coming out from everywhere. And this is the ticket that we have. Go up now and so excited. We are ascending the stairs. So many people all here to see the Eiffel Tower and you can see the lift there. Finally Eiffel Tower is happening. हेलो, हम आ गए हैं लिफ्ट के अंदर एंड पूरे तरीके से मुंबई के विरार लोकल वाली वाइब्स. इट्स वेरी क्राउडेड एंड mom's hair is in the video and there are a lot of people here. I can't see anything, I can't show you anything. I will show you the rest of the things when I exit from this lift, but just thought of posting a small snippet. The view of Paris from level 2 of the Eiffel Tower, and there are many people who are clicking pictures from the level below as well. This is Paris, that's river Seine on which I had done a cruise the last time I was here. Hello. Uh-oh. Why is my view blurred? Yeah, there you go. We breached. रिवर सेन के ऊपर काफ़ी क्रूजेस चल रही हैं. हम लोग इस बार नहीं कर रहे हैं लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रही हैं काफ़ी. आई एम जस्ट अफ्रेड माई फ़ोन विल फ्लाई आउट ऑफ माई हैंड्स. गाड़ियाँ वगैरह सब चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा एंड सब लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं यहाँ पर. इधर और कुछ इंटरेस्टिंग फ़िलहाल तो नहीं है. वो साइड एम्प्टी है. आई वंडर. हाँ, नहीं ले आ पीपल बट इट्स कंपैरेटिवली एम्प्टी. ओह, this is fun. चर्च गेट लोकल जा रही है नीचे. एक्चुअली ऊपर वॉज चर्च गेट, नीचे वॉज विरार, बट ओके, यू गेट द जिस्ट. सीरी ना उस साइड. वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स. यू कैन सी द व्यूज दैट वी सॉ ऊपर से. Now I think it's going to stand on level 1. From here, come. I can get it. Don't worry. And we are. I think this is level 1. We do not want to get off at level 1. We want to go to the ground level. Going towards the ground level, and we have descended. এইখান থেকে ওই নদীটা দেখা যাবে, তাই জন্য বলছিলাম এদিক দিয়ে তো এই সাইডটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে এমনিতেও. Our Eiffel Tower tour comes to an end here. We are going downwards. We always talk about the right or the left bank. So we never ask to live on the north or south. We ask to live on the right or the left bank. So we're right now on the left bank. In Paris,
It was also supposed to be destroyed, and we also decided to keep it. Now the building consists of 2 wings with in between a platform from where I had the best view in the night time. Sorry, we are at the Arc de Triomphe, which I had visited last time as well. So just for your general information, this was built by Napoleon Bonaparte. He died before it was completed, but as you know, he was a great French emperor and he did a lot of things which I'm not here to talk about. Our guide was telling us a lot about the arch, and here is the Arc de Triomphe. There is a section where they have names of the soldiers, the unsung heroes who died during the war. And this is the whole street, and this is mommy in front of Arc de Triomphe. God, I'm shaking. It is very cold. I have taken off my gloves and everything for photos, but I'm dying of cold. I can't even keep my bare hands outside. It's very, very cold, and we have to click some pictures. We are just here for a photo stop. फिर इसके बाद हमको बस में वापस जाना है. फिर हम जाएंगे. मुझे बहुत दूर से वॉशरूम जाना है. ठंड में बहुत वॉशरूम मिलती है. That is not what I wanted to tell you, but yeah, this is a very great monument. यहाँ पे बहुत अच्छे एंगल्स में फोटोज आ रही हैं. तो चलो हम फोटोज लेंगे. I will see you. Bye. Celebrating the spirit of triumph with Arc de Triomphe. In the world, the biggest Louis Vuitton. So I was mentioning they started by making luggage and suitcases. Now they make handbags, purses, clothes, jewelry, perfumes, shoes. Louis Vuitton. So this building will be reopening for the Olympics, and inside the building there will be some sports competition. So that's the Grand Palace on the right, on the left the Small Palace. And if you have a look on the facade of the building of the Small Palace on your left, keep in mind that originally it was supposed to last only for a few months. And then thanks God we decided to keep it. Look, left hand side, how beautiful is this building. Originally supposed to be destroyed after a few months. Nice. Of course nowadays we don't do that anymore, right? Temporary buildings are very plain. Between both statues presenting horses, look to the left, that's the Champs-Élysées that we just drove down with the arch at the top, the India Gate. We're going to go around. Right hand side, those gardens are called the Tuileries Gardens. From this square down to the chopping the head of the animals. That's how he got the idea of using it for human beings. It was brought back to France, adapted to the human being, then gave his name Guillotin to the machine guillotine. For the Invalids Hospital bollo to. So much of French history. Look to the right hand located side. on Oh my these God, look at the car. streets. Well, nice, isn't it? And the Champs-Élysées, the India Gate, right hand side. Arbitrary. Longest gallery in the world. So the 3 highlights Hello. are the Venus of Milo, the Winged Victory, Winged Victory. 2 Greek statues from the 2nd century before Christ, and of course they are famous paintings Mona by Lisa. Leonardo da Vinci. They are Mona Lisa. Mona Lisa. Yes. If you look through the arches on your left, you'll see the other side of the museum. Look, left hand side. And there's a courtyard in the middle where they built and Yes. opened in 1989 the architecture of a glass pyramid, which is the main public entrance of the Louvre Museum. थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा फॉर द रिमाइंडर ऑफ आवर डे इन पेरिस. लेकिन आई होप आपको ये एपिसोड भी पसंद आया होगा. आईफिल टावर वॉज, एज आई मैंशनड, अमेजिंग एंड बहुत ही ज़्यादा ठंड थी. मैंने बहुत ही डेयर डेविल जैसा काम किया. एंड एक फन चीज़ आपको बताती हूँ, जो आउटफिट आपने देखा जो मैंने पहना हुआ था, आई हैड परचेज दैट आउटफिट फ्रॉम पेरिस इन 2018. शॉन्स-एलिजे जहाँ पे आर्क दे ट्रायम्फ लोकेटेड है, वहाँ पे आर्क दे ट्रायम्फ से थोड़ा सा आगे चल के ही एक H&M का शॉप था, तो वहाँ से मैंने ये खरीदी थी. वाई? बिकॉज वी वर टोल्ड दैट स्ट्रीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शॉपिंग स्ट्रीट्स इन द वर्ल्ड. ओके, एंड मुझे ऐसा था कि आई वॉन्ट टू गेट समथिंग फ्रॉम हियर, कि आई हैव
purchased something from one of the most expensive shopping areas. तो वो जो ड्रेस मैंने पहनी हुई है, it was actually from Paris, and मैंने सोचा, मैंने intentionally वो ड्रेस पहनी थी इस बार to pay a tribute to my first time here. It served as a great memory, and I had worn a jacket over that, but that was definitely not enough. बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया. एंड जो आपने पेरिस सिटी टूर के वीडियोस देखे वो बीच में से कटे हुए थे, बिकॉज I had to balance between hearing what Catherine was saying, looking at the places, shooting the vlogs, and also living in the moment. So just forgive me if you were not able to hear the entire information about it. आपको I'm sure काफ़ी resources online मिल जाएंगे. There are a lot of interesting stuff that you can read up about these places. लेकिन जो भी आपने सुना, I'm sure आपको वो सुन के भी बहुत interesting लगा होगा. Now from here we went to a very 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 thrilling and exciting place जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी स्टार्टिंग से. दिस वॉज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ आर ट्रिप विच आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू एवर सिंस वी बुक्ड इट. तो मैं अभी से आपको नहीं बताऊंगी कि वो क्या है, आप गेस करिए कमेंट्स में. एंड आई एम गोइंग टू कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, जहाँ पे हम देखेंगे पार्ट 2, which is the second half of this very day, 8th December 2022. So, yup, until we meet on Monday again, कुछ ही दिन है before we meet again, तो ज़्यादा इंतज़ार आपको करना नहीं पड़ेगा. You obviously know what to do. Like and share the video with all your friends, especially जो यूरोप जाना चाहते हैं या जो जा चुके हैं, to help them relive the memories. Comment करके बताइए which was your most favorite part from this video, and if you are someone who has been to Paris and has seen the Eiffel Tower and all the places that you all saw in the vlog, let me know कि आपका पहला impression कैसा था. What did you feel when you went there? I would love to know about all your stories. Subscribe to the channel, press the bell icon, because अभी एक के बाद एक we are on a roll, baby. We are going to be witnessing a lot of the fun and the धमाल that we have had. तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. And I am going to see you on Monday with episode 3, which is technically going to be part 2 of this very episode. But बहुत fun, and I hope you guys are as eager to witness the episode as I am to show it to you. So until Monday, you know the drill. Stay awesome. Keep shining. Hasta la vista.